today I will start the chapter ecological community. And ecological community has got lots of topic, and that also includes community succession. I have sent two presentations. I have sent two presentations and one note. Presentations are for revision and notes are for studying. Okay, I will open them shortly. Okay. So the first thing is community ecology. Now, what is community? We will see the definition of community. So, community. This is. Have you anybody seen this movie? ये movie देखे थे? देखेছিলে केउ? না স্যার। This is from the Lion King. If you have not seen the Lion King, Walt Disney's Lion King, please make it a point to see this movie. This is a perfect. What is ecology and what is life? This is a perfect cinema. It's a cartoon, children's cartoon, but this is absolutely the perfect thing which takes place in the jungle. And why lion is the king? Because it is an apex predator, so it's on the top of the food chain. Therefore, it is the king. You have one lion. So, what is a community? Community, it is an assemblage of species living close enough together for potential interaction. So, first thing in population, you saw that many individuals living in a given area at a given amount of time. Community is you have different populations of species, different species. Lion, you have langur, you have birds, you have jackals, hyenas, deers, insects, grass, trees, everything living together in a forest. So that is a forest community. So population has got only single species, but in a community you have several species. So communities, they differ in their species richness, and they also differ in the number of species they contain and the relative abundance of different species. So, species richness is in a particular community how many different types of species are present. If many hundred and in a forest you will have lots of types of species, but in a desert you will have few types of species present. In a fish aquarium community you will have only one or two types of fishes present. So the community richness, species richness, this decreases. So the different types, many types of species, and not only many types of species, how many types of species are present? मतलब सबका एक है ना, সবার একটা না, তোমার দরকার you need how many of each of them are present, and that is measured by the relative abundance. কতগুলো একটা স্পিসিস পাওয়া যায়, कितना एक टाइप ऑफ स्पीशीज मिलता है? Okay. So, all different species in a ecological community, different populations of different species living in one given area, and they interact with each other. आपस में
इंटरेक्शन होता है। जैसे लायन हंट्स फॉर द लिविंग टुगेदर इन द सेम जंगल, दे आर हंटिंग, द लायन हंट्स द डियर ईट्स द ग्रास। सो देर इज एन इंटरेक्शन। देन डियर के बॉडी में तुम देखोगे बहुत सारे लाइस मिलता है। So all these are interaction between species. What are the different types of interaction? एक है competition. Lion, tiger, they compete for the deer. Then you have predator parasitism. Predation मतलब क्या होता है? Lion is eating the tiger. And parasitism मतलब like the little lice is biting inside the biting the deer from inside. Then mutualism. Both are helping each other. बोथ आर हेल्पिंग ईच अदर। देन यू हैव कॉमेंसलिज्म, दोनों एक साथ है लेकिन वन इज बेनिफिटेड और एक का कुछ नहीं होता है। कंपटीशन में क्या होता है? व्हाट हैपेंस? माइनस कॉमा माइनस, मतलब जब दो लोग কম্পিট করতে हैं, when two people are competing, দুজন যখন কম্পিট করছে একজনের সঙ্গে নিজেদের মধ্যে, তখন কি হয়? what happens is both of them, it's a negative type of interaction, that is माइनस माइनस, बोथ ऑफ देम, दोनों का नुकसान होता है। ताई तो एग्रीड? इफ टू स्पीशीज आर कॉम्पिटिंग, देन दोनों का ही तो नुकसान होता है ना? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, দুজনে লড়াই করছো, তার একটা জিনিসের জন্য দুজনেরই তো ক্ষতি হচ্ছে। The next is first, next to is predation. Predation, what happens? जो the predator मतलब लायन, लायन का फायदा हो रहा है, लेकिन डियर का क्या हो रहा है? डियर इज लॉस। नेगेटिव हो रहा है उसका, उसका तो लाइफ चला जा रहा है, इट्स नेगेटिव फॉर दैट डियर। पैरासाइटिज्म में वैसे ही भी हो रहा है, कोई पैरासाइट अंदर में है जो पैरासाइट को पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन व्हाट हैपेंस टू द होस्ट? होस्ट का तो नेगेटिव ही हो रहा है ना? यस सर। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दोनों दोनों को फायदा दे रहा है। लाइक इन कोरल रीफ्स, यू हैव इन कोरल रीफ्स में जैसे क्या होता है? यू हैव द एल्गी जूजैंथेली लिविंग इन ऑन कोरल रीफ्स। सो जूजैंथेली provides sugar which it makes through photosynthesis to the coral, and the coral oxygen लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, and plants need carbon dioxide, sunlight for making sugar. So the कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही प्लस प्लस होता है। हाँ, दोनों को, both of them are benefited, symbiosis जैसे, that is mutualism। कॉमेंसलिज्म में एक का प्लस, एक का कुछ फर्क नहीं पड़ता है या नहीं है, कुछ नहीं आ जाता है। लाइक सम ऑफ these birds, they are sitting on top of a cow। हाँ, बर्ड का बैठने का जगह मिलता है, काऊ का कुछ होता ही नहीं है, बैठे या ना बैठे उसका कुछ आता जाता नहीं है। एक का कोई मतलब फायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है, একটার কোনো লাভ হচ্ছে না, ক্ষতি হচ্ছে না, আর একজনের খুব লাভ হচ্ছে, দ্যাট ইজ কমেন্সালিজম। competition can happen, interspecies competition can happen when resources are limited। so देखो, एक लायन है या लेपर्ड है, दो बोथ ऑफ देम आर फाइटिंग फॉर द डियर, दोनों में झगड़ा होता है, बोथ ऑफ देम आर फाइटिंग। so between two different lion and leopard, they are two different species। हाँ, रिसोर्सेज लिमिटेड, डियर तो उतना ही नंबर है, लेकिन यहाँ पे दो, एक जंगल में दो शेर हो गया प्रॉब्लम। देन कंपटीशन का व्हेन बिग एग्जांपल, Gauss's law, they tested competition। There are two species of Paramecia. One is Paramecium aurelia. This is Paramecium. It is a protozoa। दोनों का species same, they belong to the same genus, but species one is Paramecium cordatum।
सो इफ यू ग्रो देम इन सेपरेट कल्चर, ये रेड वाला पैरामीशियम ऑरेलिया है, धीरे से लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेबल पॉपुलेशन। एंड अलग सा फ्लास्क में यू आर ग्रोइंग पैरामीशियम कॉर्डेटम, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेबल पॉपुलेशन। कोई दिक्कत नहीं, दोनों में कोई कंपटीशन नहीं, দুজনেই দুজন দুজনকে কিচ্ছু ক্ষতি করছে না। बट व्हेन यू प्लेस देम इन द सेम कल्चर, एक ही फ्लास्क में दोनों दे दिया, व्हाट हैपेंस, कंपटीशन हुआ एंड पैरामीशियम ऑरेलिया जीत गया एंड पैरामीशियम कॉर्डेटम हार के सब बाय 16 डेज यू विल फाइंड नो पैरामीशियम कॉर्डेटम, कंपटीशन में हार गया। सो गॉस's competitive exclusion principle states that complete competitors cannot coexist। लायन और टाइगर कभी भी एक जंगल में नहीं दिखेगा। তুমি বাঘ আর সিংহ একটা জঙ্গলে পাবে না। दे आर कंप्लीट कॉम्पिटिटर, सेम चीज खाता है। सो लाइक कॉर्डेटम एंड ऑरेलिया, ये कल्चर में दे आर ईटिंग द सेम फूड, बट जो जीत गया है दैट इज पैरामीशियम ऑरेलिया। सो द गॉसेस exclusion competitive exclusion principle states that complete competitors, that is complete competitors मतलब two species with similar needs for limiting resources, resource तो limited है, इतना ही खाना मिलेगा तुमको। हाँ, इंसान बंदर के साथ शेयर नहीं करेगा, खुद पहले खा लेगा। सो कंप्लीट कॉम्पिटिटर्स कैन नॉट कोएग्जिस्ट इन द सेम प्लेस। क्लियर? বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. Next is, what are ecological niche? When does complete competitor can, when can competitive uh, when can competitive मतलब कंप्लीट कॉम्पिटिटर्स, सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस है। एक एक्सेप्शन है व्हेन कंप्लीट कॉम्पिटिटर्स कैन कोएग्जिस्ट व्हेन दे यूज डिफरेंट इकोलॉजिकल नीश। सो व्हाट इज नीश? नीश क्या होता है? एड्रेस प्लस हैबिटेट, कहां रहता है, हैबिटेट, हैबिटेट एड्रेस प्लस ऑक्यूपेशन, मतलब उसका काम, उसका रहने का ठिकाना ये है, काम क्या है, वो टीचर है। रहने का ठिकाना यहाँ पे है, वो उसका काम क्या है, इट लिव। हेलो, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. ओके, एक्चुअली एक वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ था। ओके, सो ओनली व्हेन, फॉर एग्जांपल रोहू, कातला और मृगला, थ्री टाइप्स ऑफ फिशेस, हाँ, वो लोग एक ही जगह पे रहे, दे आर कंप्लीट कॉम्पिटिटर्स। समझे ना? दोनों दोनों को ही जब तुम कुक करके खाओगे ना, तो दोनों का टेस्ट, तीनों का टेस्ट सेम ही, लगभग सेम ही रहता है। बट दे हैव गॉट डिफरेंट इकोलॉजिकल निशेस, इसीलिए एक ही पॉन्ड में यू कैन हैव रोहू, कातला एंड मृगला। इन द सेम पॉन्ड यू विल हैव रोहू, कातला एंड मृगला, बिकॉज रोहू ऊपर में रहता है, कातला बीच में रहता है पॉन्ड के, और एकदम ग्राउंड में, पॉन्ड के नीचे में रहता है मृगल। हाँ, मृगला, सिरिना मृगला, मृगल माछ जो होता है। हाँ, ठीक है। सो दिस इज, ये लोग कंप्लीट कॉम्पिटिटर, लेकिन एक ही तालाब में तीनों ही बच रहे हैं, जिंदा है, बिकॉज दे हैव टेकन टू डिफरेंट इकोलॉजिकल नीश। इकोलॉजिकल नीश मतलब एड्रेस प्लस ऑक्यूपेशन। रोहू होएगा लो सरफेस फीडर, कातला इन बिटवीन फीडर, एंड एकदम बेंथिक फीडर, बॉटम फीडर हो गया मृगल। तो तीनों का ऑक्यूपेशन अलग हो गया, तीनों अलग अलग जगह पे खाते हैं, लेकिन एड्रेस क्या है, वही तालाब में रहता है, तालाब नंबर 302 पे रहता है। क्लियर? बुझेছো? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. तो इसीलिए इसी, ओनली व्हेन दे ऑक्यूपाई डिफरेंट इकोलॉजिकल निशेस, ओनली देन दे कंप्लीट कॉम्पिटिटर कैन कोएग्जिस्ट, नहीं तो नहीं रहेगा।
जंगल में शेर और बाघ दोनों एक ही जगह पे ही रहता है, मतलब नहीं रह सकते हैं। लायन एंड टाइगर कैन नॉट लिव इन द सेम प्लेस। देन यू हैव one more thing, fundamental niche versus realized niche. What is fundamental niche? That is the niche that a species potentially could occupy in the absence of competitors. फंडामेंटल निश है कि ये अगर कोई रोहू और कतला नहीं रहता तो मृगल ऊपर भी आ सकता था। ठीक है, दैट इज द फंडामेंटल निश। वो ऊपर भी चला जाता है, जब रोहू कतला नहीं रहता है तो मृगला ऊपर भी चला जाता है। दैट इज इट्स फंडामेंटल निश, पूरा ही फंडामेंटल निश है। लेकिन रियलाइज निश कौन सा है? द निश टू विच अ स्पीशीज इज रेस्ट्रिक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स कतला है और रोहू है, तो उसीलिए उसका रियलाइज निश है बॉटम में, नीचे। सो इट्स रियलाइज नी, और रियलाइज निश হচ্ছে নিচে পুকুরের তলায়। ও চাইলে ফান্ডামেন্টাল চাইলে ওপরেও থাকতে পারতো যদি রুই কাতলা না থাকতো, কিন্তু ও থাকতে পারছে না, কারণ ওপরে রুই কাতলা আছে বলে ও রিয়েলাইজ নিশ ইজ বিলো, বটম ফিডার। देयर इज क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स confirm this. थैलेमस नाम का एक, यू हैव एन आर्थ्रोपोड एंड यू हैव बैलेनस। सो नॉर्मली बैलेनस नीचे रहता है और ऊपर में रहता है थैलेमस। लेकिन इट्स कभी कभी अगर बैलेंस नहीं रहता है, व्हेन बैलेंस इज नॉट देयर, इट कैन स्टे एट द बॉटम आल्सो। इट इज अ टाइप ऑफ क्रस्टेशियन। इन द एब्सेंस दोनों पूरा जगह ले सकता है, बट दोनों अगर है तो यहाँ पे रहे। सो इट्स रियलाइज्ड नीश ऑफ बैलेंस इतना ही है, ऑफ थैलेमस ऊपर से नीचे रह सकता है। लेकिन उसका मतलब यहाँ है फंडामेंटल नीश पूरा है, लेकिन रियलाइज नीश इतना ही है। लेकिन बैलेंस सिर्फ इतना में ही रहता है, तो उसका रियलाइज नीश एंड फंडामेंटल नीश आर द सेम। ठीक है, Yes, sir. বুঝেছো জ্যোতি? হ্যাঁ স্যার। So what they do resource partitioning. This is known as niche segregation. मतलब सब ने अपना अपना जगह, সবাই নিজের নিজের জায়গা তৈরি করে ফেললো, হ্যাঁ, পুকুরের মধ্যে রুই কাতলা মৃগেলের মতন। দিস ইজ, রুই ওপরের খাবার খাচ্ছে, ইয়ে কাতলা মাঝখানের খাবার খাচ্ছে, নিচের খাবারগুলো খাচ্ছে মৃগেল। দিস ইজ নোন অ্যাজ রিসোর্স পার্টিশনিং। It is the differentiation of ecological niches. Resource partitioning is deep, मतलब সবাই সব জায়গায় থাকবে। যেরকম ফ্ল্যামিঙ্গো একদম তলার থেকে খাচ্ছে, একটু ওপর থেকে ড্যাবলিং ডাকস খাচ্ছে, তার থেকে আরেকটু ওপর থেকে অ্যাবোসেটস খাচ্ছে, তারপরে অস্ট্রা ক্যাচার্স, অয়েস্টার ক্যাচার্সরা আরেকটু ওপর থেকে অয়েস্টার খাচ্ছে, প্লোভার্সরা আরেকটু ওপর থেকে খাচ্ছে, थोड़ा सा और ऊपर से खा रहे हैं। So this is known as resource partitioning. So character displacement. So as a result of resource partitioning, bodies develop. So there are two types of speciation. One is sympatric speciation, other is allopatric speciation. You know that species have evolved from one species, you have two different species have evolved. So because of changing environment, allopatric speciation happens. Allo matlab when there is a geographical barrier between two species. दो तालाब में दो मेंढक है, लेकिन बीच में एक लैंड है। सो दे आर जोग्राफिकली दे आर सेपरेटेड बाय द लैंड इन बिटवीन।
ठीक है, एक तालाब से दूसरे दसों अलग डिफरेंट है, सो डिफरेंट टाइम्स में ग्रेजुअली different characters accumulate किया, and then after these characters have accumulated, what happens, they become two different species. So because of resource partitioning, हाँ, bodies different हो जाता है. Like G fuliginosa and G fortis, these are two types of birds. They have taken to eating different food. उसका देखो beak size separate हो गया. This is known as character displacement. Predation, you know, a predator eats prey. Now, Lotka-Volterra model, there is oscillations in predator-prey interactions. What happens actually is that you have hare. Hare is a type of rabbit, and lynx is a type. This is lynx, a type of cat, fox-like cat. So this lynx, they eat hare. So the red is the population of lynx, and green is the population of hare. So when the population of hare falls down, population of lynx was high, then the population of hare দেখো এখানে বেশি রয়েছে, बहुत ज्यादा है. Then at that time the population of hare was low because सबको खा लिया. When they were eaten, totally they were eaten. When the hares were eaten, the population of lynx also fell down. So when the number of, so oscillation, so जब प्रेडेटर ज्यादा रहता है, प्रे का पॉपुलेशन कम हो जाता है. व्हेन प्रे का पॉपुलेशन कम हो गया, नंबर ऑफ प्रेडेटर आल्सो फॉल्स, क्योंकि खाना नहीं मिल रहा है. फिर कुछ दिन बाद फिर अगेन प्रेडेटर प्रे पॉपुलेशन बढ़ गया, दैट द प्रे पॉपुलेशन इंक्रीजेस, देन अगेन द प्रेडेटर को खाना मिल गया, अगेन द लॉट ऑफ प्रेडेटर्स फॉर्म. अगर सब प्रेडेटर सब प्रे को खा लिया, तो एक ऑसिलेशन होता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता है, অল্টারনেট আপ ডাউন চলता है. ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। सो दिस इज नोन एज लॉटका वोल्टेरास मॉडल. इसका एक फॉर्मूला है, उसको रट्टा मार लेना. वो मेरा इस लॉटका वोल्टेरा का नोट शायद इसमें नहीं दिया, बाद में और एक नोट देना है. देन यू हैव प्लांट डिफेंसेस का लाइक कलरेशन. ये यहाँ पे एक चिड़िया है, ऐसे घुल मिल गया है, दिखाई नहीं दे रहा है. सो दिस इज नोन एज कैमोफ्लेज. दिस इज अ डिफेंस. एपोसेमेटिक कलरेशन इज दैट टाइप ऑफ कलरेशन, मतलब अपने आप को इतना ये एक्चुअली ऐसे कलर वलर बना लिया तो सबको डर लग जाता है, अरे बाप रे बाप ये सब क्या है रे, इसको नहीं खा सकते हैं. एक्चुअली बहुत टेस्टी है, लेकिन ऐसा कलर है बॉडी का, देख के लगेगा कि ये पॉइजनस है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिमिक्री है ये, इसमें नहीं पढ़ना है. और पैरासाइटिज्म भी मैं बता दिया. तो दिस इज आज का लेक्चर, यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ. अच्छा, एनी क्वेश्चंस? नो सर। नेक्स्ट डे वी विल टॉक अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन, वो सेम चैप्टर में है. নোটসটা পাঠিয়ে দিয়েছি. হ্যাঁ ওকে, স্যার। ওকে দেন, বাই বাই. थैंक यू सर। सर इंटरनल एग्जाम होगा? ना, हाँ, नेक्स्ट मंथ. तो सर जो जीई हम लोग लिए हैं उसका कल ही हो गया है. फर्स्ट सेमेस्टर का कल ही ले लिया. जी सर. वो तो अभी मना किया था. एनीवे कोई ये नहीं है. तो सर कोई बच्चा दिया है कोई नहीं दिया है, तो फिर से डेट मिलेगा देने का? हाँ, कोई दिया है कोई नहीं दिया है, वो डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करता है. नॉर्मली अलाउड नहीं है. तो सर जूलॉजी जो हम लोग का ऑनर्स उसमें कब स्टार्ट होगा? दिसंबर का लास्ट? नहीं नहीं, वो
नेक्स्ट ईयर होगा, नेक्स्ट मंथ जनवरी के मिडिल मिडिल में होगा। अभी तक नोटिस नहीं आया है। यस सर।